Nilesh. हाँ सेमिनार अच्छा ये बको अरे नीलेश છે ને સર રિયાનમાં જ બેસો છે કે આનો નામ છે ને મારા ઓકે તમને કઈ કામ છે કે હા શું કામ છે બોલો વચ્ચે લઈ ગઈ છે હું નાસ્તો મંગાવવાનો હતા કે તો એટલે Friends, our Secretary of WRC, CMM Mihir Vyas is joining, so he's asked for wait for a couple of minutes. So he's on the way. He'll join in next 2 minutes. हाँ भैया आवे स्पीकर क्या है Deepak called guest. Otherwise, hourly I have guest. You all એમાં હશે મારું નામ આવે તો છે નીચે આટલું દેખાતું તો મારું આવે છે એમ ને એ લોકો જોઈ શકતા હશે ને
So good evening, friends. We are starting our webinar for today's webinar. The webinar Okay. is conducted by MSME Task Force of WRC jointly with Baroda chapter of Cost Accountants and Ahmedabad chapter of Cost Accountants. With us, our beloved CMA Mihir Vyas, the Secretary of WRC, is with us. Sir, welcome you. And Thank the you. Chairman of Baroda chapter of Cost Accountant CMA Priyank Vyas is with us. And Thank you. welcome to all the members for joining this webinar. And very warm welcome to our the learned speaker CMA Chetan Vyas. Sir, Mir sir, I request you to please give the introduction, and then I will give the speaker introduction, and then the session will start. Over to you. Thank you so much, Vandit bhai. Uh, we said CM Mihir Vyas, Secretary of WRC and part of the PD committee. On behalf of WRC Baroda chapter, Ahmedabad chapter, I would like to welcome each and every one of you on these CEP events. Welcome you all. Also, I would like to welcome our today's speaker, CA Chetan Bhai Vyas. He gives his time and his busy schedule. So thank you so much, sir, and welcome to this CEP program. Also, I would like to welcome our Boda chapter chairman, CMA Priyank Vyas, our Ahmedabad chapter chairman, Uttam Bandari, sir, PD committee chairman, Vandit Bhai Trivedi, PD committee chairman, CMA Malhar Darwadi, and my beloved friend, CMA Chaitanya Mohira, chairman of WRC, and all the committee members of WRC, Ahmedabad chapter and Baroda chapters. Friends, I request everyone kindly put your membership number and mail ID so that we can allot CEP. Without this, we are not able to give any CEP. So request every member to share your membership numbers and CEP programs. Vandit bhai, also I would like to welcome all the attendees. Without you, it is not possible to attend this program. So welcome every members of CMS and non-CMS also. Vandit bhai, kindly now introduce our speakers and start the sessions. Thank you so much, everyone. Thank you, Mihir bhai. So on today's session, the SME listing, the an opportunity for the professionals. So a very burning topic which we have selected, and for this we have the learned speaker CMA Chetan Bhai Vyas, and it's an honor for me to give his introduction. So Chetan Bhai is a professionally qualified as a chartered accountant. Uh, he has been associated with National Stock Exchange since 2009, and he has extensively handled inspection, enforcement activities, and membership compliance for the stock broking industry at the NSE. Presently, Chetan Bhai is looking after SME listing for Gujarat and Madhya Pradesh region. Sir, on behalf of WRC Vadodara and Ahmedabad chapter, I welcome you and I request you to please enlighten us with your knowledge. It would be always a pleasure to listen to you. Sir, thank you. Over to you, sir. Thank you. Whether everyone able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Uh, Thank you, CMA Chapter Chairman, ICMI Baroda, Mr. Priyank Vyas. Thank you, Mihir ji. Thank you, Vandit ji, for giving me a wonderful introduction. And thank you, CMA Chapter Vadodara as well as Ahmedabad Chapter to give me an opportunity to talk with you all CMA guys, because it is almost so many years. Uh, we are not interacted on a differential topic. Actually, I had asked Priyank Bhai and Mihir Bhai ki we have to arrange some topic related to our fellow professionals where we can have the opportunity where we can also work together, where we can work together to grow ourselves, not only a professional side as well as for our client side. Today's topic is really interesting for all of you guys, because every now and then today newspapers, every media is covering SME IPOs. So everyone is thinking it is not a new topic,
as such, the platform which was earlier launched by NSE in the year 2011-12, it is almost 11 years old platform. Now, if I go statistically, so Gujarat is #1 state where highest number of companies got listed. So it is a proud for us where we are sitting in such a state where highest number of companies got listed across the India. And second state is Maharashtra. So there is an n number of opportunity because from Gujarat it is almost 104 companies got listed. There are n number of MSME companies are still lying with us as our client, where we can discuss with them, nurture with them, guide them how they can come forward and list themselves on exchange platform. Before, without wasting time, I just share my PowerPoint presentation. Priyankji and Mihirji, please allow me that whether I'm able to share this. Yes, you can share. Yes. Okay. Please confirm me whether it is able to see to you guys or not. Sure. Yes, it's visible. It is visible? Okay. Yes. So our today's topic is on the basis of SME listing an opportunity for a professional. So each professional, whether it is a CA, CS or CMA, we all together have to work together where we can discuss with our MSME promoters or MSME clients to whom we are currently serving as a professional, or maybe we are working with such type of organization in a job also, where we can talk to our promoter that there is an opportunity is available where MSME companies can also go forward and list themselves on exchange board. Earlier, if I talked about any history, earlier before 10-11, it was not possible for any MSME companies to come forward and list on exchange board because the provisions and eligibility criteria of exchange is such a way that no any MSME companies can able to satisfy those eligibility criteria. And till date, those criteria are remain the same. The first and foremost criteria for a company to go for a listing on main board, which we called as a bigger platform, where all big companies are coming for raising the capital fund. The first and foremost eligibility point was that out of last 5 years, there must be 3 years, any 3 years, minimum 15 crore cash accrual, earning before interest, tax and depreciation. So for an MSME companies to earn such profit is too difficult. So at any point of time, it is not possible for any MSME companies to come forward and list on exchange board. Same information was passed to the exchange as well as to the government by a dedicated finance task force, which was appointed by the government in the year 10-11, where they come out with a report that why there was no new MSME companies are becoming a bigger corporates. Because earlier in 1990s, those companies who were earlier listed, like Infosys, I talked about TCS, or if I talked about Reliance, they were also MSME corporates when they started their journey as a stepping stone as a business. But they become a larger corporates, and currently it is not possible for an MSME company to go forward, and in the year 10-11, they identified that it is too difficult for an MSME companies to go for listing on exchange board. So government directed both the exchanges, NSE as well as BSE, to start a dedicated platform. NSE has started a dedicated platform, which we had given the name NSE Emerge platform. A platform which was dedicatedly for an MSME companies, where they can raise the funds and take all the benefits which all big companies are currently enjoying when they are got listed on exchange board. So till 2011-12, it's a journey where started, where almost on NSE we had listed 348 corporates, where our competitive exchange has also listed almost 450 plus companies.
So as a professional, it is our opportunity where we can talk to our promoter. This is a platform where now MSME companies can also go to the public and raise the funds and increase his growth journey in a next level. Now question will come as a professional. So at which juncture we have to start talking with our client or to our promoter in under which we are working as a job? So every company has a different life cycle. So we have to first of all understand whether our client company or our company in which we are working as a job, it is currently in which phase. We have divided phase in 4 different steps. First, if a company is a very startup company where promoter has just started his business with his own fund and with a family and friends. So I'm not talking about this stage, which is called as a startup phase. Then there is one more stage will come, it called to be an early stage, where a company can raise the funds from debt and venture capital or angel networks. It means a company has started the business. It is almost a year or 4 years or 3 years down the line, where they had an opportunity to raise the funds from the banking channel with taking the loans, or they can opt for getting the funding from angel networks. Now one more stage will come, it called to be a growth phase, where there's a potential opportunities available for a promoter where they can do the exponential growth if they get exceptional good fund from the market or through the private equity. I'm talking about this phase where we have to start talking with our client. There is an opportunity available where they can go for listing on exchange board, or there is an opportunity they can also search for the fund from the private equity. Then one more phase will come when all, let's say, our promoter or a company has not choose to go for an exchange, but they have choose for going for a private equity. But these private equity funders, they are taking exit at this stage, which we called as a main board listing or bigger board company listing, where all big investors are taking exit and retail and other institutional clients were asked to join as an investor. So we have to identify that our client is at which stage where we can start talking with them. If there isn't one opportunity, the phase will be called as a growth phase, where promoter can see easily that if currently the turnover of a company is, let's say example is 10 crore, he can easily say that if I get this much fund in my business, I can raise this turnover from 10 to 15, 15 to 20, and 20 to 50 crore in next coming 3 years. It called to be a growth phase. He is taking time to getting new fund because currently the system of financing is such a way that if any company wish to go for fundraising, or let's say partnership firm or an individual business go for raising the fund, they get the funding from banking and financial institution on the basis of collaterals. Without collateral, there is no funding opportunities available. But a promoter wants to grow further. There is a strict provision where he doesn't have any other collaterals, but he has the potential where he can raise his business in the next level. So we have to start talking with him. There is an opportunity where he can come forward and list himself on exchange board. Now the question will come, what is the criteria or eligibility norms for any company who can come forward and list on the exchange board? The first and foremost point which I mentioned here, that is nothing but minimum 3 years of track record. 3 साल का बिजनेस होना चाहिए. दूसरा पॉइंट मेंशन किए, आउट ऑफ 3 years, 2 years पॉजिटिव
कैश अक्रूवल, 2 साल पॉजिटिव कैश अक्रूवल होना चाहिए, 3 साल में से कोई भी 2 साल पॉजिटिव कैश अक्रूवल होना चाहिए, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बिजनेस से वो कमाता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट वी हैड मेंशन, नेटवर्थ शुड बी पॉजिटिव, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी बिजनेस के साथ हम बात कर रहे हैं उसका कैपिटल प्लस रिजर्व पॉजिटिव होना जरूरी है। We are not mentioned in eligibility norms about revenue and turnover. So, क्या साइज होना चाहिए, क्या रेवेन्यू होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है एलिजिबिलिटी के लिए। बट वन पॉइंट कैच लाइन यहाँ पे मेंशन किया है, पेड अप कैपिटल पोस्ट आईपीओ शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़। जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है कंपनी की पेड अप कैपिटल, वो आईपीओ लाने के बाद भी 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। If your client's company's paid up capital exceeding 25 crore, so as per the SEBI norms, those companies are eligible for only for main board listing. So that's why this provision was mentioned here, eligibility norms was mentioned here. Post IPO paid up capital should not exceed 25 crore. So all participants who are with me in this today's session, आपने देखा एलिजिबिलिटी नॉर्म्स बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब यह है कि हर कंपनी, हर एमएसएमई कंपनी एलिजिबल है। यस, वैसे देखें तो हर कंपनी यहां पे एलिजिबल है यहां पे लिस्टिंग करने के लिए। बट हाउएवर देयर आर 2 litmus tests which I have not mentioned here. First, exponential business plan. आप जो भी क्लाइंट अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना चाहते हो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, हमें पहले ये समझना है whether that promoter has the exponential business plan. अपने बिजनेस को बड़ा करने का उसके पास प्रोसेस ड्रिवन थॉट प्रोसेस है कि नहीं, कि नेक्स्ट 5 साल में वो अपना बिजनेस कहाँ पे लेके जाना चाहता है। जैसे आज वो बड़ौदा में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना लेट्स से मकरपुरा जीआईडीसी में चला रहा है और उसकी फाइनल प्रोडक्ट लेट्स से वो गुजरात में, सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात में सप्लाई कर रहा है, बट क्या उसके पास वो विजन है कि पूरे गुजरात में उसकी प्रोडक्ट आगे जाके वो लॉन्च करना चाहता है कि आगे जाके वेदर वो नेबरिंग स्टेट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है कि वेदर ही हैज दैट माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू हिज बिजनेस टू बी ग्रो। इट्स कॉल्ड टू बी एन एक्सपोनेंशियल बिजनेस प्लान। एंड स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ लेट्स से फिगर्स की बात करूं तो आज लेट्स से वो 5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, बट उसके पास 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25 और 25 से 50 करोड़ का बिजनेस नेक्स्ट 5 साल में उसके पास विजन है, एक्शन प्लान है, बट है वो रुका है किसके लिए? उसके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, फंडिंग नहीं मिल रहा है उसके लिए। सो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल 5 क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के और उसके बाद 2 लिटमस टेस्ट, एक्सपोनेंशियल बिजनेस प्लान एंड स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब पॉइंट आता है कि हमने कंपनी तो सिलेक्ट कर ली, बट व्हाट आर द न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स व्हिच आर इंप्लीमेंटेड और कंप्लायंस आर रिक्वायर्ड इफ अ कंपनी इज गोइंग फॉर लिस्टिंग ऑन एसएमई बोर्ड। सो यहाँ पे जो भी एसएमई आईपीओ आते हैं उसमें मिनिमम 50 अलॉटीज आर कंपलसरी। 50 एप्लीकेशन, कोई भी आईपीओ आता है एसएमई का तो उसको 50 एप्लीकेशन मिलना जरूरी है। मिनिमम 25% ऑफ डाइल्यूशन इज कंपलसरी, यानी प्रमोटर का जो स्टेक 100% है इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो आगे जाके उसको हमें लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसका जो स्टेक है उसमें 25% कंपलसरी हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, विच इज अ सेबी लॉ, सेबी रेगुलेशंस मेंशन किया हुआ है। सेकेंडली, DRHP इन द सेम फॉर्मेट ऑन द एक्सचेंज ऑब्जर्वेशंस, यानी यहाँ पे ड्राफ्ट रीडिंग प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा जैसे मेन बोर्ड में बनता है,
और उसके ऊपर खाली एक्सचेंज के ही ऑब्जर्वेशंस है, यानी सेबी के पास ये अप्रूवल में जाता नहीं है। सो इफ एनी कंपनी इज कॉम्प्लाइंग एवरीथिंग, उसके डीआरएसपी जो वाउच होता है वो भी एक्सचेंज ही वाउच करता है। नो ग्रेडिंग, नो क्रेडिट रेटिंग इज कंपल्सरी। कोई ग्रेडिंग जरूरी नहीं है मेन बोर्ड की तरह। नो रेटिंग इज कंपल्सरी। 100% अंडर राइटिंग, यानी आज कोई भी एसएमई आईपीओ आ रहा है वो 100% अंडर रिटन बाय द मर्चेंट बैंकर एंड मार्केट मेकिंग ऑफ 3 years। अभी ये मार्केट मेकिंग मैकेनिज्म क्यों सेबी ने कंपलसरी किया, उसका थोड़ा मैं हिस्ट्री में लेके जा रहा हूं। और जितने भी पार्टिसिपेंट आज जुड़े हुए हैं उनको कुछ भी क्वेरी है, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। वी कैन डिस्कस later on, one to one, we can have the interaction on those questions, but please write down your questions if you have that questions on those points. Now I'm talking about market making. Why market making is compulsory by a SEBI? So if you heard in the year 1990s, there was a one platform or one exchange was launched by government of India that was called as over the counter exchange, OTC exchange. That exchange was got failure because of liquidity crunch. Let's say XYZ company was got listed on OTC exchange, and let's say X person is A person is getting the shares of that particular company. Let's say price of that company was, when that company was going for listed on an OTC exchange, was 50, and if the price rose to 55 and Mr. A is going to the counter of OTC exchange for selling of the shares, and if there is no any buyer for those shares, then the transaction was not executed because they are physical shares were exchanged between the party and they were going to the OTC counters. So there is a liquidity crunch. So SEBI understand that in SME also this can be possible over time. So they had compulsory made that if any company is going for listing on SME board, they have to appoint a one SEBI registered exchange member to appoint as a market maker. Generally, a merchant banker play a role of market maker as well as a merchant maker because they are our registered member also. What is the role of a market maker? Role of a market maker is to provide a liquidity in the capital market. Let's say XYZ Limited is going to listed on SME board. Then a market maker, Mr. A, has to apply for minimum 5% of IPO size of XYZ Limited. Let's say 20 करोड़ का आईपीओ आ रहा है तो उसका 5% हुआ, 1 करोड़ रुपए का मार्केट मेकर को अप्लाई करना कंपलसरी है और वो 1 करोड़ को उसको फर्म डिलीवरी मिलेगा, यानी उसको इतनी क्वांटिटी 1 करोड़ की उनको मिलेगी मार्केट मेकर को कंपलसरी। अब मार्केट मेकर को क्या करना है, उसको ड्यूरिंग द मार्केट वाज फ्रॉम 9:30 to 3:30 इन अ 75% ऑफ मार्केट टाइम ही विल बी देयर इन अ बाय साइड एज वेल एज सेल साइड. He will be there for giving the liquidity into the market. Let's say you had purchased the shares, let's at a 50 rupees price, and you wanting to sell the shares at a price of 55, and you had punch your order, and nobody is there as a buyer in that side. Then market maker will come and he will give you the exit into the market. Same line. If somebody wants to purchase the shares of a SME company and nobody is there for selling of the shares, then he will give the exit, yani selling side order for the giving the exit to the buyer. So that's the role of market maker, and it will be compulsory by SEBI and solves the question of OTC action, which was that liquidity crunch. Now in SME platform there is no liquidity question. Correct? So I hope everybody understand about what is an SME IPO, what are the norms. Now we go for a compliance, and it is a subject of generally where on a main board there is a quarterly financial statements are required to submit, but in SME
SEBI understand that they are MSME corporates. They asked that this MSME companies has to submit half-yearly audited accounts, not a quarterly. Secondly, corporate governance requirement are same as what a main board's requirement. So listing regulations जो main board के वही सब regulations यहाँ पे fulfill करने हैं. There's one more opportunity. Post completion of 3 years on this NSE SME emerge board, company is able to migrate from SME board to main board. There are certain conditions. They have to satisfy those conditions. Then they can migrate from SME board to main. Now question will come as an investor. Let's say there are so many professionals, they want to invest in the SME IPOs. So they have to understand that in SME IPO, minimum application size is rupees 1 lakh. And the lot will be in a multiplication of that 1 lakh itself. Let's say price is a 50. So 2000 is a lot. 100 is a price, then 1000 is a lot. So minimum 1 lakh rupees के lot में trading होता है in SME script. In main board की script में series रहता है EQ. In SME script series रहता है SN. So if you have a question, why in SME IPO SEBI had mandated 1 lakh rupees, so I will give the very specific reason. SEBI understand that on a main board, an investor can invest by rupees of 15,000 or 20,000 rupees, but in SME, only known investors who understand the business of MSME companies, who is able to understand the risk of the business of MSME, those retail clients only apply for SME IPOs. Because very few investors are read the risk factors which were mentioned in the DRHP very categorically. But we as investors, we are never reading those risk factors. We have to read the risk factors and understand properly what are the risks involved in the business. So SEBI understand that in a current situation, 1 lakh rupees is such a bigger amount. Let's say if a retail wants to invest, he will definitely take all due diligence before going for investing in the SME. Now point will come for how the company can list on the exchange. The first step is very simple. We have to understand that whether it is a partnership firm, limited liability company, LLP, or an individual business, which we call as a proprietorship business. All business are eligible. There is no any negative list. Every sectors are welcome. No negative list on a sector specific. So initially, those private limited, LLP or proprietorship company needs to convert into the public limited company. That's the first step. Then we have to introduce merchant banker. There are SEBI registered merchant banker, category 1 merchant bankers who focus toward only these MSME companies. A SEBI registered merchant banker, after appointment of that, they will prepare a prospectus, which we call as DRHP, draft ready hearing prospectus. After this preparation of that big thick booklet, which we call as 300-400 page, this prospectus was submitted to the exchange. And exchange is giving the in principle approval to the company. Post getting the in principle approval, ROC filing is compulsory. And then the listing happens. So simple 5 steps, which was earlier in a main board. If a company is applying for a DRHP or submitting DRHP, it takes almost 18 to 20 months to getting the approval. In SME, you can see that there is nowhere mentioned the SEBI name. You can see that all the powers is given to the exchange for getting the approval. We had seen the company within 60 days also, that company is going to list it and get listed on the exchange board.
So मोटा मोटी ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि if we met any promoter, if every documents and everything is in a place, within 100 days we list the company on exchange board. Such a simple platform, such a simple guidelines, and such an opportunity for an MSME promoter for get listed on the exchange board. So we had covered 3 to 4 points till time. If you have any question, we can take those questions also during our session. I can see the chat box also. If anyone has a question, till date we had discussed, till time we had discussed about eligibility norms, we had discussed about IPO framework, we had discussed about, you can write down in a chat box because we do not want to open up this mic. What we'll do, we will, you can write down in the chat box, we can discuss those points, and then we start our next point. Chetan sir, this is Mihir Vyas. Yes, sir. If company make a loss, first year profit, second year loss, and third year profits, then they will be Okay. eligible or not? So loss, whether it is EBITDA loss, my question is very clear. Whether it is earning before interest, tax, and depreciation loss? Net loss, net loss. No. So if it is earning before interest and tax positive, before earning depreciation, interest और टैक्स निकालने से पहले लेट से वो कैश अक्रूवल है धंधे में से, वो एलिजिबल है. If EBITDA is negative, then? If EBITDA is negative, then it is out of 3 years, we have to see that only 2 years there must be cash accrual. If those 2 years there is no cash accrual, then we have to wait for another 1 year. Okay. So I found one question in the Vaisakhi Joshi sir has asked, does 3 years of track record start from a converting to a public company? No, sir. The starting will be from the date of the incorporation, whether the business is a proprietorship business, जब से business start किया है वहां से वो business consider किया जाएगा. यानी proprietorship business चालू किए उसी टाइम से वो consider किया जाएगा. Yes. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब से बनी है तब से उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गिना जाएगा. ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस, बट ऑपरेशनल इनकम 3 साल में से 2 साल कैश अक्रूवल ऑपरेशनल इनकम से होना जरूरी है. So I hope there is no further question. We can start once again our PPT presentation. So we had covered stage wise how the company can list on the exchange. Now you all have a question, why Chetan Bhai is continuously asking about we have to talk to our client, we have to discuss our promoter or where we are doing our job. Why listing is required? What are the benefits? Why listing is such a important for a promoter's life, and why we have to guide them as a professional? Because there are so many benefits. It is just a one slide, but there are n number of benefits which a listed entities enjoying, which unlisted companies never get the benefit of that. So if I start with the first point, पैसा तो मिलता ही है. Raising of funds is one of the benefit, because there are so many MSME promoters, they are doing business in such a way that, which I had seen that they are earning the profit of almost 30 to 35% of a gross margin and net margin of 18 to 20%. But somehow a professional like us, we have not guided them in such a way that where they can take the benefit of their business, which currently they are doing with a very great potential business with a great profitability, because their financial statement is prepared in such a way that on the basis of, if I can put in a word that on a tax basis their balance sheets were prepared. So as and when we met
we take the meeting with the promoter or discuss about this SME platform, and when we start this analyzing their financial statement and books, we found that they had not showcased the right kind of profit in their books, and which is such a important point for any company who wish to go for listing. The valuation is totally different as compared to what the valuation will be derived for taking the loan from the bank or NBFC. In equity in a capital market, the valuation of a company is based on a profitability, which we call as a PE valuation or enterprise valuation. कंपनी कमाती क्या है, उसका लास्ट 3 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, उसको वेट दिया जाता है, और एक इंडस्ट्री पी जो सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उसका इंडस्ट्री पी क्या चल रहा है, और नॉर्मली जो भी एसएमई कंपनी आ रही है वो 8, 10 या मैक्सिमम 12 के पी मल्टीपल वो कंपनियां एसएमई में आईपीओ में एंटर होती है. यानी लेट्स से लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ऑन एन एवरेज 2 करोड़ है, 10 का पी मल्टीपल देते तो 20 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ, उसका 25% यानी 5 करोड़ का आईपीओ आ सकता है. तो आपका प्रमोटर तुरंत भड़क जाएगा, यार चेतन भाई हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू 100 करोड़ है, हमारी जो नेटवर्थ है वो 50 करोड़ के ऊपर है, हमारी गुडविल इतने की है, तो आप वैल्यूएशन क्यों इतना कम दे रहे हो. तो तब ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने प्रॉफिट क्या बताया है, एक्चुअली यू आर अर्निंग वेरी गुड but your books are not showcasing the right kind of profit. So this is the role of us as a professional firm, where we have to guide our clients to start showcasing the right kind of profit in their books. If their books are prepared, then and then only over a time they can get the opportunity to raise the funds from the capital market. Because let's say if I'm talking about any particular company who's coming for an IPO, they are not earning good, who will go for investment? Let's say currently as an investor also, what we are looking, if you're not directly purchasing or buying the shares in a capital market, let's say you are investing in a mutual fund, you are looking for the return on investment by 8 to 12%. So that is nothing but you are predicting that whatever the mutual fund in which you are investing, those mutual fund heads or a fund manager will invest in such a company who earn at least 12 to 15% of margin or profit in his business. So end of the day, question will come, which are the company who are earning really good? But my dear friend, you also know that whatever the MSMEs, whatever the functions they are doing currently, they are earning good, but somewhere it is our professional duty to ask them to showcase the right kind of profit, start paying tax on the books. Because one of the example where we had met one promoter from Ahmedabad, and we had done the analysis of the valuation with the merchant banker in the same way what I had talked. 2 करोड़ का पैट दिखा रहे थे, हमने बोला कि सर आपका तो 20 करोड़ का वैल्यूएशन बन रहा है, 5 करोड़ का आईपीओ आएगा. तो उन्होंने बोला चेतन भाई ये 2 करोड़ हम आपको जो दिख रहे हैं, हम तो कमा रहे हैं 10 करोड़, हमने दिखाया नहीं था ये तो प्रॉफिट. तो मैंने सर जो दिखता नहीं है वो दिखता नहीं है, मार्केट में कोई समझता नहीं है कि आप क्या कमा रहे हो. यू टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस विजिबिलिटी. जैसे हमने ये समझा, उन्होंने बोला कि चेतन भाई आई एम स्टार्ट टेकिंग द रिस्क, मैं इनकम टैक्स की छुट्टी नहीं आएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कमा रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं. क्यों वो रेडी हुआ? क्योंकि उसको पता चला कि वैल्यूएशन कैसे होता है. उन्होंने बताया कि चेतन भाई 6 करोड़ का प्रॉफिट पे 10 का पी मल्टीपल आप बता के मुझे बता रहे हो 60 करोड़ का वैल्यूएशन हो सकता है, और मैंने अभी 2 करोड़ बताया है जिसके ऊपर मैं टैक्स जो मैं आगे जो एक्चुअली मुझे 6 करोड़ कमा रहा हूँ या 8 करोड़ कमा रहा हूँ उस पर मिनिमम मुझे टैक्स भरना है, बट मुझे वैल्यूएशन बहुत बड़ा मिल रहा है. आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम लैकिंग. So first of all, we have to guide our clients to start showcasing the right kind of profits in their books. So listing will give the benefits of first and foremost raising the funds, opportunity to get the funds from the public at a larger place. Mind well, sir, that is easy to get the funding
Debt is easy to get from the banking channel, but equity is costliest source of getting the fund, because here shareholder doesn't have any rights, because they do not get any rights where they are investing in your company. So there must be something unique in your business where people are ready to invest in your organization. So definitely profit is one of the point, where visibility is a second point, because when a company is going for listed on the exchange, they create the visibility amongst his competitors. We are listed one company from Baroda. They are in a drugs manufacturing, bulk drugs manufacturing. Till date, we understand that we are doing the business very well, but post listed, they are considered to be the one of the 10th Gujarat listed company who are manufacturing these bulk drugs. You understand? Their visibility become the in a larger space, because if they are listed on the on an exchange, they are fall into one particular sector, industrial sector. Let's say pharma. In a pharma, they fall into the drugs manufacturing. In a drugs, there are how much companies are got listed? They become the 10th of the Gujarat. You understand? Currently, India is such a global platform where investors are ready to invest in your client's company, but they are not visible to them because they are in a private limited or LLP function. They are doing the good business, but nobody are ready to invest or become a partner in their business because there is no visibility of that company. But listing gives the visibility to the. आज हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कार्ड देते हैं, बिजनेस कार्ड एक दूसरे को स्वैप करते हैं. हम पहला जाके क्या करते हैं, वी आर डूइंग द गूगल ऑफ अ पर्सन और गूगल ऑफ अ कंपनी. When a company is got listed on the exchange, the first and foremost point will come. It is listed on National Stock Exchange. It gives immense opportunity to our investors as well as our customers also to have the visibility on exchange that they are listed on the exchange. A credibility. You are not only complying the laws of the government, which are GST, income tax, correct? You are also following the bylaws of regulations of exchange as well as SEBI. So higher credibility will be available as compared to those who are not listed on the exchange board. You know that all big companies are getting the cheapest rate borrowing terms as compared to all MSME companies who are taking the loan from banking sector, because those companies are listed on the exchange board. They have their credit ratings. All bankers are easily see their financial statements every quarterly. It is vouched. It is available in the public domain. They understand the business model. They are able to give them a higher funding as compared to our MSME promoters who are not listed. If a company get listed, they have the age as a borrowing terms as compared to other unlisted entities. सबसे बड़ा इश्यू एमएसएमई कंपनियों को आता है रिट्रेशन रेशियो. लेबर रुकता ही नहीं है उनके पास, या उनके पास कोई ह्यूमन रिसोर्स आता ही नहीं है जो हाई कैलिबर एम्प्लॉय हो. So as a consultant, as a CMA professional, we have to guide our MSME client how we can ask a right kind of human resource in our organization, how they can come and do the job with us. Because we are listed one company from IT industry from Ahmedabad. The promoter is Jaimin Shah. They asked us before the IPO, Chetan bhai, it is very difficult for us to recruit any IT guy from IIT or IIM. मैंने पूछा ऐसा क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है आपको? तो जयवीन भाई ने बोला कि भाई अहमदाबाद में कोई आईपी प्रोफेशनल जो बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा है, वो चाहता है कि वो बैंगलोर जाए और या तो वो बॉम्बे में रहे. मैंने बोला क्या प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या मिल जाता है ऐसा बैंगलोर और जो अहमदाबाद में हम नहीं दे पा रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि चेतन भाई वो जो पैकेज ऑफर कर रहे हैं वो पैकेज मैं नहीं ऑफर कर रहा हूँ, मैं नहीं ऑफर कर पा रहा हूँ. तो मैंने बोला कि सर देयर इज वन टूल इज अवेलेबल इन द कैपिटल मार्केट वेयर यू कैन रिक्रूट द हाई कैलिबर, बिकॉज आपके बिजनेस को आपको आगे लेके जाना है,
आपके क्लाइंट को, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ के लिए लेके जाना है, तो आपको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हाई कैलिबर एम्प्लॉय को अपने पास रखना पड़ेगा, वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्मूथर एंड ग्रो फर्दर ओवर अ लॉन्गर टर्म. We had asked them to start taking the use of capital market tool like ESOP, employee stock option. One of the beautiful tool, and he had recruited one guy post listing on exchange, and that guy has contributed a lot for their business growth. So there are n number of benefits if a company got listed on the exchange board. Appropriate valuation. Till time the company's valuation is based on the company's asset and what are the liabilities. But here the valuation is based on the market capitalizations. What is the market cap? Which is listed on exchange board, which is the real wealth of a company. A liquidity. When a company is got listed on exchange board, the company get the benefit of liquidity by way of their shares are traded on exchange board. A share certificate which your client has not seen yet, which can be considered as a currency, but maybe they are not printed their shares also. So we have to guide them. There is an opportunity in exchange board where they can list and they can create their shares as a currency. Post listing on exchange board, I had seen so many small companies become a bigger company over a time. Because if a company who is manufacturing in Ahmedabad, they want to launch their products into southern India, like Kerala or Andhra Pradesh, it is very difficult for them to compete with the local player because there is a big transport cost. How he can survive with that competition? He has to start some units there. But my dear friend, it is not time where we have to start looking for the land, start the business, and then launch the product. Until time the product can be different. So it's a time for an entrepreneur where they can merge a smaller group of company from that region, start next day the production there, and start launching that product there. That's the globalization. That's the growth potential is available for an MSME promoter to increase his business next level. One of the beautiful point which I had mentioned here, that is nothing but shares as collateral. My dear friend, I had studied the Nifty 50 all scripts. In all scripts, there's no promoter has given their house or their financial, their workplace, or maybe their factories to the bank as a collateral. They had given their promoter's stake as a collateral to the banks. So my dear friend, it is our role to guide our MSME promoter, go for listing on the exchange board, because RBI had made mandatory to the banking sector. They can take the listed company shares as a collateral. We had seen a company who got listed on exchange board and post SME listing after 2 years. They have the relationship with the SBI very well. The promoter is so happy. He had called me, Chetan, where we had imported 1 crore material out of India, and I have to give some collaterals. At that time, I am not finding my FD. मैं कैसे पैसा लाऊंगा? मैं 50 लाख कहाँ से जोड़ूंगा? उस time पे चेतन भाई, I had given my shares as a collateral. So relief to the promoter, because till time, whenever he wanted to do something for his business, he is searching for a collateral. So this is the platform where he can get the benefit by listing on the exchange board. यहाँ पे मैं थोड़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स का डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे ख्याल से सब लोग को पता है कि ऑलमोस्ट all different SME companies are going to list it. So there are 2 platforms are available in India. SEBI had asked both the exchanges to identify their own eligibility norms. We had mentioned our eligibility norms here, and we had also discussed BSE has their own eligibility norms. Initial 3 years, we are very keen to identify that which companies where we can start talking. Till time, BSE has already listed 100 odd corporates, but you can see the numbers here. It is latest number 15 September 2023. NSE we have listed 355 corporates, BSE 453. Our market cap is around 83,000 crore. Their market cap is around 85,180 crore. We had raised almost 6,584 crore. We have raised around 5,449.
Average issue size on NSE is around 19 crore. They have the 12 crore. We had migrated out of 355, 136 crore, 136 companies are already migrated from SME board to मेन बोर्ड. वो SME बोर्ड से मेन बोर्ड चली गई है, बड़ी कंपनियां बन गई है, उनके शेयर्स एक शेयर्स बाय और सेल होना चालू हो गया है, वो 136 कंपनी. तो बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है. मैं चाहता हूं एज ए CMA प्रोफेशनल्स यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट टॉकिंग विद योर क्लाइंट्स, discuss with them, start talking where you are doing your job to your promoter, entrepreneur, to your managers. There is an opportunity available where our company can go forward and list on exchange board. You can see there's a huge potential. आपको पता है गुजरात में कितने MSME रजिस्टर्ड है? It is almost 10 लाख से ज्यादा. उसमें चलो मैं माइक्रो और स्मॉल को निकाल देता हूं तो भी 5% पकड़ता हूं, तो 10 लाख का 5% कितना हुआ? 50,000 ऐसी SME कंपनियां हैं जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल एंड गाइड कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, वेयर वी कैन आल्सो ग्रो विद दैम. सो यू कैन सी द स्टेट महाराष्ट्र 101, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, this much companies are came from this particular states on exchange. आप ये ग्राफ देखिए, हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था 2012-13 में. हमने इनिशियली 2 कंपनी को लिस्ट किया था जिसने अराउंड 44 करोड़ का फंड रेज किया था. उसके बाद 3 कंपनियों को लिस्ट किया, देन 42, 2 कंपनी को लिस्ट किया 38, देन 5 39 करोड़ का फंड रेज हुआ, देन 35 कंपनी का लिस्टिंग हुआ, 460 करोड़ उन्होंने फंड रेज किया ये 35 कंपनियों ने. उसके बाद 17-18 में 86 कंपनियां आई जिन्होंने लिस्टिंग किया और हमने 1416 करोड़ रेज किया फंड. तो ऐसा नहीं है कि 86 कंपनी एकदम से हमारे पास आई है. देयर आर फ्यू कंपनीज व्हिच वर मैट विद अस विद लाइक CA, CS और CMA जैसे आपके जैसे प्रोफेशनल्स हमने मिलाया, बट उनके बुक्स उस मुताबिक नहीं थे, तो हमने उनको गाइड किया कि पहले तो आप अपने बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ठाक करें, आप पहले जो कमा रहे हैं वो दिखाना स्टार्ट करें, आप अपने ग्रुपिंग, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए. तो ये ऐसा नहीं कि 86 कंपनी एकदम से हमारे पास आई. देयर आर फ्यू व्हिच वी हैड मेट इन द ईयर 14-15, दे गॉट लिस्टेड ऑन द ईयर 17-18. देन हमने 62 कंपनी लिस्ट की जिसका फंड रेज हुआ 1052 करोड़. उसके बाद कोरोना का फेज आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां कम हो गई, दे आर वेटिंग फॉर राइट टाइम ऑफ मार्केट. हमारे पास पाइपलाइन होती है, हम उनके साथ डिस्कस करते रहते हैं और वो राइट टाइम पे जब मार्केट अच्छा होता है तो वो लिस्टिंग करते हैं. यहाँ पे 12 कंपनी ने लिस्ट किया जिन्होंने 192 करोड़ फंड रेज किया. उसके बाद 8 कंपनी ने 79 करोड़ फंड रेज किया. उसके बाद 31 कंपनियों ने 21-22 में 504 करोड़ फंड रेज किया. लास्ट ईयर हमने लिस्ट किया था 62 कंपनी जिन्होंने 1327 करोड़ फंड रेज किया. और ये हाफ फाइनेंशियल ईयर में मैं आपको बताऊं, वी हैड ऑलरेडी लिस्टेड 46 कॉर्पोरेट्स and fundraise is almost 1451 crore. आप देख सकते हो हाईएस्ट फंड हाफ ईयर में रेस हो चुका है और ऑलमोस्ट मेरे पास 15 से 20 कंपनियां फ्रॉम गुजरात है जो पाइपलाइन में है, जो अपना SME IPO लाना चाहते हैं. तो ये टॉपिक भी आज का ऐसा ही था कि प्रोफेशनल्स अपॉर्चुनिटी क्या है, तो उसके ऊपर भी मैं आता हूं. बाकी 2-3 स्लाइड हमारे प्रोफेशनल्स लोगों के लिए यही है कि एज ए प्रोफेशनल हम कैसे जुड़ सकते हैं ये प्रोसेस के अंदर. Before that, just I wish to give you the proper knowledge about that. अब देखिए, हर स्टेट ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट चाहती है कि हर स्टेट में से MSME कंपनियां लिस्टिंग कराए. हिमाचल प्रदेश देखिए वो क्या सब्सिडी दे रहा है, 25% ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू द एक्सचेंज और मैक्सिमम अप टू ₹5 लाख. राजस्थान गवर्नमेंट लिख रहा है 10% ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू एक्सचेंज और मैक्सिमम अप टू ₹2.5. गुजरात गवर्नमेंट, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और आपको पता है तमिलनाडु, यानी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु से कोई भी कंपनी आती है तो वहां की गवर्नमेंट 30 लाख रुपए का उनको सब्सिडी देने के लिए तैयार है. आप देखिए ह्यूज पोटेंशियल एज ए प्रोफेशनल हाउ वी कैन ज्वाइन. आप सबको पता है कोविड टाइम पे अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में से निर्मला सीतारमण मैडम ने बताया था कि
दे आर इन्फ्यूजिंग अ मदर फंड्स, डॉटर फंड्स, सिस्टर फंड्स वो लोग बनाने वाले हैं और इन्होंने इन द प्रोसेस स्टेट वाइज वो फंड बना रहे हैं। एक साइड पे आपको पता है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट से पैसा निकाल के वो फंड जुटा कर रहे हैं। तो एक साइड पे वो चाहते हैं कि एमएसएमई कंपनियां आए और उसमें वो पैसा लगाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया, विल एनकरेज एमएसएमई टू गेट लिस्टेड ऑन अ मेन बोर्ड वेयर दे कैन आल्सो टेक अ स्टेक्स ओवर। गवर्नमेंट चाहती है ये अच्छी अच्छी कंपनियां जो, क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताऊं 1977 रिलायंस का आईपीओ कितने रुपए का है? Nobody knows at that time Reliance become a bigger company. बट उन्होंने 10 रुपए के शेयर्स मार्केट में दिए, पब्लिक से पैसे जुटाए और एक ग्रोथ लिया। उनके बाद उन्होंने फिर से फंड रेज किया, पब्लिक ने वापस पैसा दिया। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट द फंड एवरी टाइम वेयर ही वांट्स टू गेट द फंड, बिकॉज पब्लिक के पास इतना पैसा है। मैं कल की बात करूं, कल हमने एक आईपीओ क्लोज किया, एसएमई आईपीओ, जिसमें करीबन 43 करोड़ का फंड की जरूरत थी, जिसमें 5000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है एंटरप्रेन्योर को 5000 करोड़ मिला, मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा पड़ा है। एज ए प्रोफेशनल इट इज अवर अपॉर्चुनिटी where we have to identify right kind of a client. We have to guide him, because every now and then if we talked about compliances, then no promoter wants to talk with us. It is our role to start talking with them for their business growth. It is our time where a professional has to understand the business, guide them as a professional flag bearer or torch bearer, how his business will grow. Because my dear friend, it is our slide to understand that it is not to have a more files. अभी का टाइम ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 फाइल होनी चाहिए, 500 फाइल होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो और जॉब कर रहे हो, तो आपके ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाद में कवर करूंगा। मैं अभी प्रैक्टिस इन सीएमए की बात करूं, इट इज नॉट अ टाइम वेयर यू हैव टू 100 ऑल फाइल्स। इट इज अ टाइम इफ यू हैव ओनली 10 फाइल्स, make then 10 files to a bigger company, because you grow, he will also grow. If he grow, you will also grow, because end of the day आप क्या कर सकते हो, तो आप आगे जाके एक आईपीओ कंसल्टिंग सर्विसेज भी दे सकते हो, where you have to guide a MSME promoter, take the fees related to consulting of this company, how they can list, post listing compliance की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। हर विजिबिलिटी आपके, बाकी कोई सीएमए ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा है बट आप ये कर रहे हो, तो आपकी विजिबिलिटी अक्रॉस द ऑल सीएमएस विल डिफर और आप एक अलग सीएमए की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। और नेवरदलेस आप खुद जो प्रमोटर को जानते हो, आप जिसके साथ काम करते हो, आप खुद जॉब कर रहे हो, तो आप एक इन्वेस्टर भी बन सकते हो कि ये कंपनी आगे जाके बड़ी बनने वाली है। मैं जिस प्रमोटर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे पता है ये कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इन्वेस्ट आल्सो। सो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल टाइटल लिखा है, ग्रो विथ योर क्लाइंट्स। इफ यू विश टू ग्रो विथ योर क्लाइंट्स, इट्स अ विन-विन सिचुएशन. It is not a time where you have to find every now and then new client. It is a time to make your existing client to a bigger corporate, bigger company. This is a platform for them, and this is the unique advantage which I am talking to you as a professional. This is the professional opportunity where we have to start talking, start discussing, start understanding. Try to meet with us. We can guide you how your company, how that client will list on exchange. This is a small disclaimer. This is my contact number. You can write down your or take a photograph of that. Now we can take whatever your questions, because my PPT slide has completed. Whatever your questions, we have a time, enough time. We can take each and every questions. We can discuss one to one. मेरे ख्याल से सभी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं। हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दिया है। अभी इंटरेक्शन करना है। चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस रखिए। आप ऑलमोस्ट 64-65 पीपल है, मेरे ख्याल से किसी ना किसी को कोई ना कोई क्वेश्चन तो रहेगा ही। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है चैट बॉक्स में कि that 3 years is from any span of years. Suppose out of total 3 years, operation of last, profit of 5 years. नहीं, लेटेस्ट देखेंगे। हमने बोला हिस्ट्री के लिए, बोला मैंने कि वो कौन से
उसकी हिस्ट्री तो हम जब से बिजनेस स्टार्ट किया है तब से कंसिडर करेंगे। ट्रैक रिकॉर्ड के लिए लेटेस्ट 3 साल में उसका आउट ऑफ लेटेस्ट, यानी आज मैं बात करूं 22-23, तो 21-22 यानी 22-23, 23-24 में बैठे 22-23, 21-22 एंड 20-21, ये 3 साल में उसका 2 साल पॉजिटिव कैश एक्रूवल होना चाहिए। समझ जी, मेरे ख्याल से मैंने आपका क्वेश्चन का जवाब दिया है। और कोई क्वेश्चन? यू कैन स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन। यस सर। मंदिर जी। सर हाँ बोलिए मीर जी। आईपीओ लिस्टिंग का एक्सपेंस क्या होता है, और इफ सेबी एनएसई या बीएसई रिजेक्ट देन इट विल बी रिफंडेड, और फिर से इतना ही खर्चा करना पड़ता है? नहीं, मैं आपको पूरा चीज बताता हूँ। देखो, रिजेक्शन रेशियो बहुत कम है, ऐसा रिजेक्ट होता नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि एज एन एसएमई मुझे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह यहाँ पे बिठाया, तो जनरली 90% ऑफ केसेस हम लोग मिलते हैं, वो प्रमोटर को पहले समझाते हैं, प्रोफेशनल साथ जुड़ते हैं, और उसके बाद उसका आईपीओ आता है। तो ऐसे कोई केस नहीं है। हाँ, बट समवेयर लेट्स से हमारी लिस्टिंग टीम को ऐसा कुछ मिला जहाँ पे कॉम्प्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, बट वो हुई, तब वो केसेस के अंदर रिजेक्शन होता है। 90% विड्रॉल होता है, रिजेक्शन तो आज तक एक भी एसएमई आईपीओ का हुआ नहीं है। यानी विड्रॉल मींस वो चाहते हैं कि फिर से आप पूरा चेक करें, फिर से प्रॉपर प्रिपेयर करके आप फिर से फाइल करें। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या पैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रोफेशनल्स को यही क्वेश्चन होगा कि चेतन भाई आपने बातें तो बहुत अच्छी कर ली, हमारी फीस का क्या, हम क्या कमाएंगे, बिजनेस तो अच्छा है, बात क्लाइंट से बात करने में भी मजा आएगा, बट एग्जैक्टली कॉस्टिंग क्या रहता है, हम कैसे इसके अंदर अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे इसके अंदर जुड़ सकते हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉस्टिंग के बारे में। जी, कॉस्ट को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। आज लेट्स से कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट कॉस्ट इज कॉल्ड टू बी अ प्रोसीजरल कॉस्ट। प्रोसीजरल कॉस्ट यानी आज लेट्स से कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है, तो पहले वो प्राइवेट लिमिटेड होगी तो उसको लिमिटेड करनी पड़ेगी, यानी एक सीएस को अपॉइंट करते हैं ये लोग, जो कन्वर्जन्स का काम करेगा। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट होगा जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक रिस्टेट फॉर्मेट में लेके जाएगा, जो डीआरएचपी में जाएगा। तो एक सीए का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद एक लॉयर अपॉइंट होता है जो ड्यू डिलिजेंस करता है, जो पूरी कंपनी जब से स्टार्ट हुई, यानी डेट ऑफ द कंपनी वाज स्टार्टेड, लेट्स से वो 10 साल पहले चालू हुई है, 20 साल पहले चालू हुई है, या 25 साल पहले चालू हुई है, वो कंपनी का फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग से उसकी कंपनी के बारे में, उसके प्रमोटरों के बारे में, उसके ग्रुप ऑफ प्रमोटर के बारे में, उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में पूरा ड्यू डिलिजेंस होता है। अभी ये सभी जो अलग अलग लोग हैं, जिसमें मैंने बोला सीए, सीएस, लॉयर, देन आरटीए अपॉइंट होता है, देन अपॉइंट होता है अपना सीडीएसएल, एनएसडीएल, एक्सचेंज, ये सभी की जो मिला के फीस है, जो मैं प्रोसीजरल कॉस्ट बोलता हूँ, वो रेंज फ्रॉम 15 लाख टू 20 लाख रुपीस, 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए। मेरे ख्याल से जीबी मिस्त्री सर के वहां से माइक चालू है, सब डिस्टर्ब आ रहा है। नमस्कार, कैन आई स्पीक सर? सर मैं कॉस्ट का ये डिस्कस कर लूं, उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूं। अपने पास टाइम है, इनफ टाइम है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, सो ये जो कॉस्ट है, तो सर आप माइक खाली अनम्यूट कर लीजिए, तो क्या होगा कि आवाज नहीं आएगा। सो जो फर्स्ट कॉस्ट है वो प्रोसीजरल कॉस्ट है, विच इज रेंजेस फ्रॉम 15 लाख टू 20 लाख, जिसमें सेपरेट 7 से 8 एजेंसी मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करता है, और वो एजेंसीज को ये बिल रेज करेगा और उसका पेमेंट होगा। उसके बाद दूसरा कॉस्ट है जिसको हम बोलेंगे मर्चेंट बैंकर फीस, दैट इज ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 20 lakhs to 25 lakhs और 15 लाख, 15 से 25 लाख के बीच में मैंने कई मर्चेंट बैंकर की फीस देखी है। वो केस टू केस रहती है, कई बार 15 लाख में भी क्लोज करते हैं, 20 लाख में भी क्लोज करते हैं, 25 लाख में क्लोज करते हैं। इफ आई पुट अ टोटल ऑफ ए प्लस बी, प्रोसीजरल एक्सपेंस एंड मर्चेंट बैंकर फीस, तो रेंज बढ़ जाता है 35 लाख से 50 लाख। तो कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहता है तो 35 से 50 लाख के बीच की रेंज है, इसके अंदर ए प्लस बी का खर्चा आता है, यानी ए सेपरेट डिफरेंट एजेंसीज जिसका पेमेंट हमें करना पड़ता है एज ए प्रोसीजरल कॉस्ट, जो भी खर्चा आएगा उसका बिल आएगा, हमें पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा खर्चा हमने मर्चेंट बैंकिंग फीस का बोला, तो रेंज मैंने बता दिया 35 से 45 लाख और 50 लाख का।
उसके बाद तीसरा खर्चा आता है वो मार्केट मेकर, जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। व्हाट इज अ मार्केट मेकर? अ ब्रोकर, अ सेबी रजिस्टर्ड, एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर required to appoint, correct, required to appoint for this SME IPO। अभी ये जो खर्चा है वो 3 साल तक रहने वाला है, तो वो खर्चे को हम बोलेंगे केस टू केस बेसिस। मैंने 2 लाख भी देखा है, 3 लाख भी देखा है, 10 लाख भी देखा है। तो जैसी भी आईपीओ की साइज है वो मार्केट मेकर के साथ बैठ के वो लोग डिस्कस करते हैं और एक फीस कोट किया जाता है। जनरली मर्चेंट बैंकर ही मार्केट मेकर का खर्चा लेता है, तो वो रेंज अपने पकड़ के रखते हैं 2 लाख से 10 लाख की रेंज। वो हुआ अपना तीसरा खर्चा। अभी चौथा खर्चे को हम बोलेंगे, मैंने आपको आईपीओ के एक फ्रेमवर्क के अंदर एक पॉइंट मेंशन किया था, 100% अंडर राइटिंग। अभी 100% अंडर राइटिंग का मतलब आपने सबने गूगल करना है तो गूगल कर लीजिए। 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया था, क्या वो सब्सक्राइब हुआ था कि नहीं? मुझे क्या चैट बॉक्स में आप लिख के देंगे? इन्फोसिस का आईपीओ जो आया था, फर्स्ट आईपीओ, क्या वो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ था कि नहीं? मुकेश जी ने तो मस्त आंसर दे दिया है चैट बॉक्स में। बाकी लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं मेरे साथ? लेट्स बी इंटरेक्टिव। यस, जग रहा है सर, जग रहा है, सब जग रहा है। जग रहे हैं ना? हाँ, तो यस सर। आप चैट बॉक्स में डालिए वेदर इन्फोसिस का ये जो आईपीओ आया था 1993 में, वो आईपीओ क्या फुल्ली सब्सक्राइब हुआ था कि नहीं? विजय जी यस बोल रहे हैं, बाकी जी नो बोल रहे हैं। सर आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ था, मैंने बोला गूगल भी कर लीजिए आप। अनसब्सक्राइब था, बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा है वैशाखी जी ने, जोशी जी ने, बहुत ही बढ़िया। अनसब्सक्राइब रहा था, मर्चेंट बैंकर ने बेल आउट किया था, यानी मर्चेंट बैंकर ने पैसा डाला और इन्फोसिस का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। यानी यहां पे सेबी ने क्या कर दिया, कोई भी कंपनी एसएमई का आईपीओ लाना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर हैज टू गिव 100% अंडर राइटिंग। यानी पैसा नहीं मिला पब्लिक से तो मर्चेंट बैंकर को पैसा देना है, करेक्ट? तो मर्चेंट बैंकर सिलेक्ट करेगा कि कौन सी कंपनी लाना है, कौन सी कंपनी नहीं लाएगा, क्योंकि उसका रिस्क है। आप समझ गए? तो फोर्थ खर्चा है अंडर राइटिंग एक्सपेंस और अ फंड रेजिंग कॉस्ट, which is ranges from a 6% to 7%, depend upon case to case। IPO साइज का 6 to 7% या 8% भी मैंने देखा, कई जगह पे मैंने 9% भी देखा है। तो ये रेंज है 6 to 9% की। तो मैंने खर्चे को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक है प्रोसेस कॉस्ट, 15 से 20 बोला मैंने। मर्चेंट बैंकर कॉस्ट विच इज रेंजेस फ्रॉम 15 lakhs, 25 lakhs और 25 lakhs, यानी 15 से 25 लाख, दोनों को मिला के मैंने बोला 35 से 50 लाख की रेंज। उसके बाद मैंने बोला मार्केट मेकर का खर्चा विच इज रेंजेस फ्रॉम 2 lakhs to 10 lakhs, वो 3 साल का खर्चा है। और लास्ट कॉस्ट मैंने बोला फंड रेजिंग कॉस्ट, अंडर राइटिंग कॉस्ट, विच इज रेंजेस फ्रॉम, आप उसको कोई भी नॉमेनक्लेचर से बुलाए, मर्चेंट बैंकर ये खर्चा अपने से लेता है। बट इट इज अ वन टाइम कॉस्ट विच अ पब्लिक डोमेन कंपनी टेक द एडवांटेज बाय गेटिंग रेज द फंड्स। और ये ऐसा है कि ये फर्स्ट टाइम एंट्री ले रहा है मार्केट के अंदर। उसके बाद वो बहुत सारे कैपिटल मार्केट के टूल, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला सकता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ला सकता है, बहुत सारी चीजें आज आईपीओ लाने के बाद वो कर सकता है। तो मेरे ख्याल से मिहिर जी, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब कवर किया है। दिस आर द कॉस्ट विच आर यस सर, बहुत परफेक्टली कवर किया है और विद डिटेल। थैंक यू सर। अब मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि एज ए प्रोफेशनल हम कहाँ पे कमाएंगे। चेतन भाई आपने तो इतना सारा बता दिया, आप प्रोफेशनल का टॉपिक भी रख दिया है हमारे सीएमए चैप्टर में। तो सर यहाँ बैठे हुए सभी 63 लोगों को मैं बता दूं कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जब कोई केस मर्चेंट बैंकर को रिफर करते हो तो दे आर गिविंग ऑफिशियल फीस टू कॉल्ड एज रेफरल फीस। बिकॉज आज कोई भी मर्चेंट बैंकर, आज वो बॉम्बे बैठा है, अहमदाबाद बैठा है, उसको एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जो रिलाई करता है, वो 10 साल से कंपनी को जानता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे मर्चेंट बैंकर इज टेकिंग रिस्क। क्योंकि आज मैं 50 लाख 60 लाख की फीस लेके मैं 20 करोड़ का आईपीओ कर रहा हूं। आप सोचिए मैं कितना रिस्क लेके बैठा हूं। तो एज अ मर्चेंट बैंकर मेरे लिए एक प्रोफेशनल पर्सन जो मुझे कोई केस रिफर कर रहा है एज अ मर्चेंट, लेट्स से मैं मर्चेंट बैंकर हूं और मुझे कोई केस रिफर कर रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे आर गिविंग अ रेफरल फीस।
सेकेंडली, आप बहुत सारे ऐसे काम है जो ये प्रोसेस में आप खुद कर सकते हो या आपके मित्र के साथ करवा सकते हो, तो वो खर्चा वो उसमें से बात करके वो बोलेंगे आप अपनी कंपनी आपके थ्रू करवा लीजिए। तो जो मैंने 7 से 8 एजेंसी बोली उसमें आपको लग रहा है कि भाई मेरा फ्रेंड ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो 5 से पीयर रिव्यूड फॉर्म है, मैं उससे करवा लूंगा, तो इट्स ओके, वो खर्चा आपसे नहीं लेगा, वो डायरेक्टली वहां से पेमेंट हो जाएगा, बोलेगा आप करवा लीजिए। तो एज ए प्रोफेशनल अपने लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है to earn a referral fees, और that referral fees is ranges from case to case basis। मैंने देखा है वो मर्चेंट बैंकिंग की फीस जो मैंने बोला 20 से 25 तक का, उसका 5%, 10%, 15 से 20% तक, 5 से 20% तक का वो लोग रेंज लेके चलते हैं कि जैसा केस, जैसी कंपनी अच्छी उन्होंने आपके पास से मिली, उस बेसिस पे वो लोग आपको रेफरल फीस दे देते हैं। And which is an official payment, it is nothing like, let's say as a professional आप अपने क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि मैं ये पूरी एडवाइजरी मैं कर रहा हूँ और आप कंपनी से पैसा लेते हो, तो वो उतना फीस कम करके अपना कोट करता है मैंडेट, जो भी उसको मैंडेट लेना है। बट आप बोलोगे नहीं मेरा क्लाइंट मुझे पैसा नहीं देगा, मर्चेंट बैंकर ही पैसा देना है, तो मर्चेंट बैंकर वो फीस बढ़ा के वो क्लाइंट से पैसा लेता है। तो बहुत ही क्लिस्टर क्लियर है हाउ अ प्रोफेशनल अर्न इन द बिजनेस। और मैंने बाकी चीजें तो बताई कि आप और क्या कर सकते हो, आप आईपीओ एडवाइजरी कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकते हो, आप उसको पोस्ट लिस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन एबल टू। सो मुझे बताइए और कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, और कोई क्वेश्चन आ रहा है? हेलो, मेरे ख्याल से सबको ज्यादा पता चल गया है। नहीं जेपी जी बोलिए सर, सॉरी सर मैंने आपको भूल गया। यस नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। Chetan bhai, I am Jagdish Mistry. I am an engineer, cost accountant, company secretary, IB and IBBI registered valuer, and practicing as a valuer as well as through GST and all many other institutions. See, I have seen most of the banking finance for which we carry out the valuation as a mortgage finance or term finance, their asset values they consider either 50, 60 or 70% as a margin, and then the bank provides a say term finance or the working capital finance and other things. Now, before this SME listing here, what is the way forward to recast the entire balance sheet to the appropriate fair value of their assets which are there? And what is your perception and what is your advisory? Because I am a key person on this area and the front, and I am known to the entire valuer fraternity. Thank you. थैंक यू जेबी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें एसेट की रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट करके उसका बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहिए। उसके लिए हम ये आईपीओ के लिए नहीं जाते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सर जो कंपनियों की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इफ they are not showcasing right kind of profitability in a books, because सर लास्ट 6 साल से मैं ये फील्ड में हूँ, उसके पहले मैं कॉम्प्लायंस और इंस्पेक्शन करता था ब्रोकिंग हाउसेस का, बट लास्ट 6 साल में मैंने जितने भी 300 से या 400 एमएसएमई प्रमोटरों को मिला हूँ, सर एवरीबडी इज अर्निंग वेरी गुड। यानी मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने कई ऐसे प्रमोटर की फैक्ट्रीज में एंट्री ली है कि जहाँ पे एक भी कार 50 लाख से नीचे नहीं है, बट जब मैं बुक्स हाथ में लेता हूँ तो उनके बुक्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी 2 करोड़ का भी नहीं है। तो हमें ये गाइडेंस करना है कि पहले तो वो बुक्स में प्रॉफिटेबिलिटी, राइट काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना स्टार्ट करें। जब तो पहले शोकेस कि वो बिजनेस से कमा रहे हैं। और दूसरा, जब वैल्यूएशन हो रहा है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, जो मर्चेंट बैंकर वैल्यूएशन करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि एसेट को वो जीरो गिन रहा है। He will definitely look into the assets which we are relying on it. if एसेट हैवी कोई कंपनी है और जिसका मॉडल ऐसा है कि जिसमें एसेट ही कंपलसरी है, तो उसका डेफिनेटली वो एज देता है। बट सर खाली एसेट के कारण वैल्यूएशन नहीं होता। स्टॉक मार्केट एकदम डिफरेंट है। आज एक कंपनी है कि आईटीसी इंडिया होटल, उसके पास इतनी सारी एसेट इंडिया की है कि जो एक दूसरी उसकी ग्रुप कंपनी के पास उसका वैल्यूएशन उससे ज्यादा है, लोग उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। बिकॉज अभी एक ऐसा मैकेनिज्म है कि आपके पास एसेट हो या नहीं हो,
बट आप कमा क्या रहे हो, उसमें से बिजनेस क्या कर रहे हो, तो लोग उसको पैसा देने के लिए तैयार। एसेट इज रिक्वायर्ड, बट यस वी आर नॉट हियर टू आस्क देम कि भाई आप रिवैल्यूएशन रिजर्व करो, अभी से एग्जिस्टिंग प्राइस से आप अपने एसेट्स को प्राइस बढ़ा दीजिए और उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व करके अपनी नेटवर्क बढ़ा दीजिए और देन आईपीओ लाइए। मैं एक ही सबमिशन करना चाहता हूँ, हमें हमारे प्रमोटर को ये गाइड करना है कि आप अपने बुक्स को ट्रूली दिखाना स्टार्ट करें। इट टेक्स अ टाइम। मुझे पता है कि आज मैं किसी को बताऊंगा कि भाई आप 1 करोड़ दिखा रहे थे और एकदम से जीबी है, तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हिल जाएगा, वो बोलेगा कि इतना सारा क्यों एकदम से प्रॉफिट बताने के लिए तैयार हो जाओगे, स्कूटी आ जाएगी, ये आ जाएगी। बट मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे प्रमोटर है कि जिन्होंने लास्ट ईयर 1 करोड़ दिखाया, उनको पता चला कि चेतन भाई यही राइट टाइम है मार्केट में आने का, तो उन्होंने दूसरे साल 6 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखा और इस साल वो 18 करोड़ का प्रॉफिट क्लोज कर, बिकॉज उनको ये पता चल गया कि स्कूटी नहीं आनी है तो आ जाए, बट हमने जो किया है वो देख लिया है, हमें आगे बिजनेस करना है, हमें ग्रो होना है। If a promoter wants to grow, he reads because he requires a fund, wanting to grow, he wanting a larger amount from a business. तो एक अपॉर्चुनिटी है कि एसएमई लिस्टिंग में वो आ सकता है और देयर इज एन नंबर ऑफ मनी इज लाइक, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर, इतना पैसा पड़ा है, हमें राइट काइंड ऑफ गाइडेंस देना है, हमें उनको एडवाइस देनी है, हमें उनको नर्चर करना है कि कैसे वो पब्लिक डोमेन में जाके कैपिटल मार्केट का प्रोग्रेस करें। ये कुछ नया नहीं है सर, इट इज अ सेम प्लेटफॉर्म जो 1997 यानी 1977 में रिलायंस ने यूज किया, वही प्लेटफॉर्म है। 1993 इन्फोसिस ने जो यूज किया वही प्लेटफॉर्म है, बट उस टाइम पे नॉर्म्स इतने सिंपल थे तो वो लोग ने लिस्ट कर दिया। उसके बाद हमें ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि और नए रिलायंस और ऐसे बड़े कंपनियां ये एमएसएमई कंपनियों में से कन्वर्ट होके बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो। Shall I intervene, sir? I have some further question. Of course, subject to the committee and other friends who are willing to listen to me. Yes, sir. Thank May you. I know who is on Because I should also give the others to raise the question, so I should not become the only one point personality. That's why I'm asking. Yes, sir. Anyhow, Mr. In case you permit me, I want to speak to you further Yes, to yes, add yes. you. Thank Yes, you. yes, sir. Mr. Vyas, actually, you know, many promoters are keeping their land asset. You know what is a land asset? There is always a declared versus undeclared component of the value of the land. In the books of account, maybe 10 rupees, but it may be in the real terms, maybe 50 rupees, 30 rupees, or 100 rupees also, which is, in my opinion, is not a fair value, because ultimately registered valuer like us who are in the IBBI registered valuer as a land building plant machinery valuer, we provide the valuation for the purpose of mortgage finance or working capital finance or financing mode, wherein we are disclosing that in the books of account or in the asset value, whatever is reflecting versus the real fair value is XYZ, which is almost sometimes varying from 1.20 to 2 times or 3 times. And let me further enlighten you. Once you have talked about the Reliance, I want to add you further. You might be knowing when Anil and Mukesh departed, they did the revaluation of the entire assets of the Reliance. And for Jamnagar unit, they made the revaluation to the tune of 1,000 crores, which I don't want to tell. Let everybody read the balance sheet of 94, 95, and they will come to know. And similarly, in 2007 also, they did the revaluation, particularly for Baroda and Nagathon unit, to the tune of 1 crore, 1,46,000 crores. So the valuation, what you are talking, absolutely as a bookish implication at the beginning stage. Whereas the reality of the assets which are owned by the various promoters, or sometime through their land ownership or land and fixed asset ownership are individually, whereas the other assets are in the name of the company. How to corroborate those SME listing and other issue? They are very crucial phase. Many of them are having this type of questions when I talk, as you are rightly saying, because almost 4 or 5 years before this SME listing, I attended one program here in Ahmedabad, and then I raised all these questions, and there was no appropriate answer. So in my opinion, sir, please have your study feedback
and you can keep my contact number. We'll share up other than this. This is not an appropriate platform which I feel to share with you. Thank you. Yes, yes, sir. But you can enlighten any other person who wants to listen. It is your subject, sir, expertise. Yes, yes, sir. Actually, whatever you said about the valuation, sir, but in MSME companies, what we had seen that the lands are already purchased or maybe on a name of a promoter. What they have done, they are not shown in the books also. So there are chartered accountants, they are guided in a very initial stage like that. If whatever the assets you are creating, please keep on your own name. Somewhere the books are not showcasing the right kind of what we are saying as a So what happened? We are not so rigid when we are doing the valuation, or maybe our merchant bankers who are working on this valuation part. We are not so rigid. We definitely look into, but land. Real value is not only one tool to give them a right kind of a valuation. What we look, how much he is earning on the basis of this value, based on this particular asset with that particular organization. If with the assets he is not earning anything or not much appropriate valuation will be coming, then we are not focusing much on asset based. We are focusing on the what is the real wealth he is generating from the business itself. So it's a totally a subjective matter, depend upon case to case the business, what is the importance of that particular asset in the business, and then the valuation will come. So you I see can there are appreciate. certain. Yeah, sorry, you are absolutely right. भाई पैसा जितना कमाते हो उसकी बात करो, बाकी आपकी मिलकत आपके पास है, आपके हार्ट में है, रखो और मौज करो. सर मैं बताऊं आगे जाके वेल टैक्स आएगा ना, ये सभी एमएसएमई प्रमोटर को हम जैसे प्रोफेशनल्स को गाइड करना ही पड़ेगा. आज आगे जाके एज ए प्रोफेशनल इट इज अवर ड्यूटी, फेयर ड्यूटी टू गाइड देम कि आज एसेट्स कितनी भी आप बना लो, बट आपने आगे जाके लीगल हियरेंस नहीं किया, आपने अपने फैमिली ट्री नहीं क्रिएट किया, अपने फैमिली का प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं विल नहीं बनाया, तो दिस आर द थिंग्स सो क्रूशियल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे जाके ये सब टैक्सेस आने ही वाले हैं. उस टाइम पे ये सभी एमएसएमई प्रमोटर को दुख होगा कि हमने पैसा सब लैंड में क्यों डाला है. तो उस टाइम पे व्हेन द वेल्थ इज transferring from one person to other person, the government will come and ask for the tax. आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि साउथ कोरिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, उसके बेटे को शेयर्स ट्रांसफर हुए थे, उसको कुछ एसेट ट्रांसफर हुए थे, उस टाइम पे उसको कंपनी के शेयर्स बेचने पड़े फॉर गिविंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो आगे जाके इंडिया इज ग्रोइंग, हमें एमएसएमई प्रमोटर को ये गाइड करना है कि आप अपनी एसेट्स बनाइए और उसको प्रॉपरली चैनलाइज करिए, प्रोफेशनल वे से करिए. और लिस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हर तरीके के प्रोफेशनल जुड़ते हैं और उसके सिस्टमाइज करते हैं, उसको एक प्रॉपर वे में लेके जाते हैं, फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करा जाता है, बहुत सारी चीजें एड ऑन होती है, व्हील्स, लीगल हियरिंग थिंग्स, ये सब चीजें एक प्रमोटर को गाइड करना है. तो एमएसएमई प्रमोटर को ये सब गाइडेंस एक प्रोफेशनल्स ही दे सकते हैं और वो काम हमें करना है. बाकी बताइए, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है? केतन जी का मेरे ख्याल से माइक अनम्यूट हुआ है, उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए. Hello sir, good evening. My name is Ketan. I am a student of cost accountant. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ के लिए एप्लीकेशन करती है बट ऑथोराइज पर्सन अगर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं तो फ्यूचर में वो फिर अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए? क्वेश्चन को थोड़ा रिट्रेट कर लेंगे आप, एक बार फिर से पूछिए क्या पूछना चाहते हैं. कि कोई एक कंपनी है, हाँ यस सर, अगर कोई कंपनी है, अगर उसको लिस्टिंग के लिए आईपीओ एप्लीकेशन दे रहा है बट जो ऑथोराइज पर्सन है उसने वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, लाइक सेबी ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि आप नहीं कर सकते हो, तो इन फ्यूचर वो मैं एसएमई का पिक्चर बताता हूँ कि एसएमई में सेबी का रोल नहीं आता है. ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द एक्सचेंज.
इफ एनएससी में आपने सबमिट किया है तो एनएससी की कॉम्प्लायंस टीम है, हमारी लिस्टिंग कॉम्प्लायंस टीम है, वो आपको अप्रूवल देती है। और 99 केसेस, क्योंकि मैं लास्ट 6 साल से जुड़ा हूँ ये प्लेटफॉर्म के साथ, हमने एक भी केसेस को ज्यादातर रिजेक्ट नहीं किया है। हमने बोला है प्रमोटर को कि आप विड्रॉल करिए, आप अपने डीआरएसपी को प्रॉपर प्रिपेयर करें और फिर से सबमिट करें। रिजेक्शन का मतलब बहुत अलग लेवल का होता है कि आप कभी ला नहीं सकते हो या आपको कुछ, आपकी कंपनी में कुछ दिक्कतें हैं। हमने रिजेक्ट नहीं किया, हमने प्रमोटर को बोला कि आप विड्रॉ करिए, मर्चेंट बैंकर को बोला कि आप उसको ठीक ठाक करके फिर से लाइए एक्सचेंज के ऊपर। Okay, okay, sir. I got it, sir. सो मिहिर जी, मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चंस चैट बॉक्स में मैं एक बार देख लूं फिर से, नहीं है कोई क्वेश्चन। सो आई होप आई हैड ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू Thank you, Mr. Vyas. And what I want to put you into the implication is the ultimately fair valuation of the enterprise, because when you want to get a fair valuation, then there will be premium, and then there will be the PE ratio, and then everything will be there. Cash flow and the return is relevant, but what is against the asset and what is the fair value of asset is highly relevant, which is in your presentation. I find something to be added. That is my submission to you. It's choice is yours, sir. Yes, sir, surely. Actually, valuation part, generally we are not discussing on a MSME front because that role will be taken care by our merchant bankers. Generally, as an action Guiding official, several we are merchant not banker. talking. I am guiding several bankers merchant banker, and as a under Companies Act there are 6 expert. I am one of the expert as a valuer, and I provide several even RHPC, chartered engineer performance, quantitative production capacity utilization certificates, and many other issues. So what I want to convey here also, maybe sometimes you may be needed persons or professional like us. You are free to contact us. Of course, this is not a platform just to learning phase for one and all of us. But what is my knowledge, wisdom of my, I'm 73 and I'm ex-general manager of Zydus. I had carried out vertical split of Modi and Patel of those days. And even the brand valuations, current assets and the asset valuations and many other things, I did it. And I have done just the valuation of SR oil terminal of 8,200 crore assets valuation also. Of course, I am a man of a physical fixed asset, not a financial assets. Of course, I had undergone the training, but I am not doing financial assets valuation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Definitely, sir. आपने काफी अच्छा, नहीं आपने सुना वो बहुत बड़ी बात है, sir. You had listened this a session. That's very nice, and we'll definitely put you in touch if anything which we our merchant bankers wants any inputs related to that. Yeah. Definitely we will put you in touch. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So मेरे ख्याल से मेरे एंड से कंप्लीट है। प्रियांक जी आप कुछ बोल रहे थे? Yes, no issue. Yes, नहीं कुछ नहीं, बस formal vote of thanks by our madam. Please, madam. Hello. Yes, Gauri madam. Please. Yeah. On behalf of Western India Regional Council and Ahmedabad and Baroda chapter, I thank you for your thoughtful session, sir. I also thank you all the participants for attending the session in large number. We expect your cooperation. Thank you, Gauri madam. Thank you. We expect your cooperation, sir, in all the future activities of the institute. With this note, I announce the webinar is officially over. Thank you, sir. Thank you. Nearby. Thank you. Welcome and thank you. Good job done. I joined 1 hour back, but then I restricted myself. Sorry, I forgot to welcome you, sir. But initially I have already welcomed my committee member. Chalo, anyways, Thank you, sir. let's part ways. Thank you. Bye. Thank you, Chetan bhai. सर आप आपका पीपीटी सर शेयर करना। डेफिनेटली मैं आपको एक ईमेल कर दूंगा और उसके ऊपर पूरा अपने आप जितने भी पार्टिसिपेंट उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मिलते हैं अपने बड़ौदा आता हूँ तो मिलते हैं अपने एक बार। Yes, please, sir. Okay, bye, sir. Bye.